Yeah, so today I will not start something new. Your last two modules are remaining: state diagrams and components and deployment diagrams. State diagrams will take almost 1 week, and component diagrams and deployment diagrams are very easy. Maximum 1 or 2 classes will take. So we will do that. But first, let me discuss with you your midsem paper actually, so that you get an idea how you should prepare for your end sems. Because midsem was of 20 marks only. Okay, so it's fine even if you have not scored well. But I'm discussing the paper with you. You get an idea from where and how I'm asking you the questions. Okay, so that in the instant you don't repeat the same mistakes. Just wait. Let me share the file. Okay. Uh, this is blurred. I think this is looking a bit blurred. You are seeing it. This is fine or it's a bit blurred, everyone? You are able to read what is written here? Why it is showing blurred to me? Wait a minute. Yeah. Okay. So see, first let's see this question. Okay. Very simple question. This is the same diagram which I have explained in the class also. Okay, this is showing you simply the abstraction thing. See, most of your questions, around 80% of your questions of your midsem, I have directly asked you from your PPTs also. I will show you today only. Okay, only 20% questions were there which were a bit, you can say, complicated. Otherwise 80% questions were directly from your PPT. This same diagram was there in your PPT when I was explaining you the first PPT, the basics PPT. The same diagram is there for abstraction. किसी को डाउट है इसमें? Okay, these are your functions, these are your variables, and some of the variables are hidden, only some of the important functions are shown. That is the property of abstraction, right? Then your second question, it is not a language itself but a set of concepts that is supported by many languages, again from your basics PPT. तो आपकी सबसे पहली PPT है basics की PPT, same statement is given there, that is object oriented or programming paradigm, anything you can call it as. Either you can call it as object oriented concepts or programming paradigm, anything you can call it as, again from the your basics PPT. The same statement is given there. Third question, require, again from your basics PPT, the same PPT. There are three questions directly. Requirement analysis and object analysis are done during, if you see in your basics PPT where there is mentioned analysis and design, in the analysis part it is mentioned that requirement analysis and object analysis is done during analysis only. Design is for the final implementation. That same direct question I have asked. कोई दिक्कत है इसमें किसी को? So you see, in after your second test I have told you that to prepare for your midterms, I have uploaded you both test 1 and test 2 papers on the blackboard, and I have asked you that observe the questions. ये कहाँ से मैंने पढ़े, रिवर्स इंजीनियरिंग करने को बोला था मैंने. Read these questions and try to find कि PPT में कहाँ से आए हुए, and read that again. जिसने ये किया है उसके नंबर अच्छे आए मिड सम में. आई थिंक हाईएस्ट इज 17, I think is highest. Okay, then one person has got 16, one person has got 15, some of you have got 14, 13, फिर तो चलता ही चला जा रहा है सिंगल डिजिट तक. Okay, so again observe this pattern, and for you, see, most of my PPTs I don't give you much theoretical parts. Definitely your module 1 is a bit theoretical. All your remaining modules I explain mostly with the help of diagrams, but some or the other part of your PPTs contain some theoretical points. For example, packages में थोड़े theoretical points हैं, first module में थोड़े theoretical points हैं, use cases में थोड़े से हैं. These points are the utmost importance for you. To by heart them, because for example a stereotype, you know what is a stereotype, you understand what is the meaning of a stereotype, it's fine. But इसी को if I've written it with the help of a technical language, most of you are getting the questions wrong. See this question, which of the following is not a UML basic building block? This same question I think I have asked in test 1 or test 2 also. In your PPT named UML, PPT तो डाउनलोड किए ना सबने कि ऐसे ही आगे एग्जाम देंगे.
You have downloaded all the PPTs, right? So in there was a PPT UML symbols करके. In that UML symbols PPT एक डायग्राम बना हुआ है ब्लॉक्स, फिर यहाँ पे थिंग्स हैं, फिर यहाँ पे डायग्राम्स हैं, राइट? एक्सप्लेन भी किया है मैंने एकदम फर्स्ट और सेकंड क्लास में एक्सप्लेन भी किया है. सेम क्वेश्चन आई हैव आस्क्ड यू अगेन. Very logical thing is this: UML basic building blocks are those things which are provided with the UML you can say predefined. They are predefined: class, use case, package, interface, objects, nodes, anything. When I was explaining you common mechanisms, means that stereotypes, constraints, tag values and adornments. जब ये मैंने पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि ये सारी चीजें extra functionalities हैं that UML provides you. These are not the predefined functionalities. These are the extra functionalities that UML provides you. So obviously these things will not be under the UML basic building blocks. चाहे stereotype हो, चाहे constraints हो, चाहे tagged values हो, चाहे adornments हो. These things are not UML basic building blocks. They are the extra functionalities that are provided by UML. Again, a very simple and direct question. Okay, ये क्वेश्चन फिर से मैंने टेस्ट 2 में पूछा था आपसे. Again from your same module. ये UML वाला आपका PPT है. From that same PPT is mentioned this same question. This again I have explained you this also, that this is a component in the first or second class, and this is also given in your UML PPT. We are at the 6th question and अभी तक PPT के बाहर से कुछ नहीं पूछा मैंने. You are getting this sense how you have to read in your PPT. This is mentioned as component. बस इतना एक स्लाइड का डायग्राम बना हुआ है. Have you read that UML PPT? ठीक है ना मिड सेम के टाइम? एक इधर नोड बना हुआ है, शायद एक सर्वर बना हुआ है, राइट? सो वहां पे एक कंपोनेंट भी बना हुआ है. तो अगेन दिस इज फ्रॉम योर सेम PPT. So just get the essence how I'm asking you the questions. If some theoretical point like this question, this, if some statement, for example, this is a standard definition for a collaboration, समझ के भी इसको कर सकते हैं, but this is standard definition is given in your PPT, so you have to read this. यहाँ पे कुछ वो नहीं है, इसको छोड़ना है. You have to read this. This is for sure. So whatever definitions और theoretical points बहुत ही कम जगह दिए गए हैं, बट जहां दिए गए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो आएंगे ही आएंगे एग्जाम में in one way or the other. But this again, this is a very simple question. फिर ये क्या, in which software development phase preliminary user manual for Samsung smartphone will be developed? This is nothing but I am just simply asking you RUP के किस phase में preliminary user manual develop होता है. In your RUP PPT अगर किसी ने पढ़ी है तो उसमें साफ साफ elaboration phase के अंदर दिया हुआ है that preliminary user manual will be developed there, और final design के बाद develop होगा. Again a direct question from your PPT only. अभी कुछ भी बाहर का नहीं आया अभी तक. कोई डाउट किसी को अभी तक? Okay. Now see this question. You have to identify the incorrect statements. Okay, the first statement is the software incidental cohesion. पहली चीज तो ये कि you have to maximize the cohesion and you have to minimize the coupling. ये बात तो क्लियर है सबको. अब cohesion में भी, in cohesion also, which is the best cohesion? Which is the best cohesion type? 5-6 टाइप बताया था ना मैंने cohesion के. Which is the best cohesion type? And which is the worst? Coincidental. So coincidental cohesion is the worst. So does this statement make any sense? कि अगर ये worst cohesion है तो क्या एक सॉफ्टवेयर डेवलपर इसको मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेगा? नहीं, इसको मैक्सिमाइज थोड़ी करेगा. तो सबसे वर्स्ट फॉर्म का है वो तो इसको अवॉइड करने की कोशिश करेगा, राइट? मॉड्यूलराइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग अ सॉफ्टवेयर सिस्टम इनटू मल्टीपल डिपेंडेंट मॉड्यूल्स. क्या गलत है स्टेटमेंट में? व्हाट इज रॉन्ग विद दिस स्टेटमेंट? दिस इज आल्सो अ रॉन्ग स्टेटमेंट. व्हाई? डिपेंडेंट, यस. पूरी स्टेटमेंट सही है, खाली यहाँ पे इंडिपेंडेंट की जगह डिपेंडेंट लिखा हुआ है. व्हाट इज मॉड्यूलराइजेशन? यू हैव टू डिवाइड योर सॉफ्टवेयर इनटू डिफरेंट मॉड्यूल्स ताकि वो इंडिपेंडेंट रहे आपस में. आपस में इंडिपेंडेंट रहेंगे तभी तो कपलिंग मिनिमाइज होगी.
और आपस में इंडिपेंडेंट है तो कोहेजन बढ़ेगा. दैट इज व्हाट इज मॉडर्नाइजेशन. खाली एक वर्ड यहाँ पे डिफरेंट है. आई हैव यूज्ड द वर्ड डिपेंडेंट इंस्टेड ऑफ इंडिपेंडेंट. दैट इज व्हाई दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. नाउ दिस बी स्टेटमेंट, व्हाट इज दिस सेइंग? अ सॉफ्टवेयर डेवलपर ऑलवेज ट्राई टू मिनिमाइज द डेटा कपलिंग. सबसे पहले तो ये बताओ कौन सा डेटा कपलिंग के भी बहुत से टाइप है. विच काइंड ऑफ कपलिंग इज द बेस्ट ऑन डेटा. एंड सॉफ्टवेयर डेवलपर को कपलिंग मिनिमाइज ही करनी है. सो ऑब्वियसली ही विल मिनिमाइज द डेटा कपलिंग. कौन सा कपलिंग सबसे वर्स्ट है? कॉन्टेक्स्ट. तो अगर मैं यहाँ पे स्टेटमेंट देता, सॉफ्टवेयर डेवलपर ऑलवेज ट्राई टू मिनिमाइज द कॉन्टेक्स्ट कपलिंग, वेदर दैट वुड हैव बीन अ राइट स्टेटमेंट और अ रॉन्ग स्टेटमेंट. राइट. दैट विल आल्सो बी राइट. फाइन. सो दिस काइंड ऑफ स्टेट, ये तो मैं बोला भी था तुम लोगों को एक क्लास में, आई थिंक कि इसके ऊपर क्वेश्चन पूछूंगा मिड सेम में. आई हैव सेड यू, हमारे मिड सेम से 2 या 3 क्लासेस पहले मैंने बोला था इसके ऊपर. अभी तो क्वेश्चन क्या है, सम क्वेश्चन विल कम. फाइन. अच्छा, ये डायग्राम कितने लोगों का गलत हुआ है? अच्छा, पता नहीं होगा ना तुम लोगों को गलत हुआ है. ओके, इसका फाइनल आंसर है यूज केसेस. यहाँ पे आएगा यूज केसेस. हाउ मेनी ऑफ यू हैव मेड दिस थिंग रॉन्ग? इफ यू हैव मेड दिस डायग्राम रॉन्ग सिंपली मींस यू हैव नॉट रेड द पीपीटी एट ऑल. आपकी बेसिक्स पीपीटी में या शायद यूज केस पीपीटी में, आई डोंट रिमेंबर, किसी एक पीपीटी में पहले 2 या 3 स्लाइड में सीधा सीधा डायग्राम बना हुआ है. डायरेक्ट डायग्राम आई हैव आस्क्ड यू फ्रॉम द पीपीटी. आई थिंक इन द यूज केसेस इट इज देयर. इन द यूज केस डायग्राम पीपीटी द सेम एग्जैक्ट डायग्राम इज गिवन. और ये मैंने क्लास में समझाया भी था कि जब रिक्वायरमेंट एनालिसिस हो जाती है उसके बाद सबसे पहले यूज केसेस बनाते हैं. उस यूज केस को हम लोग बाकी डायग्राम्स में यूज कर सकते हैं. इस तरह करके मैंने समझाया भी हुआ है इस चीज क्लास में. तो ये क्वेश्चन बहुत लोगों का गलत है, बहुत लोगों का गलत है. Direct question it was. We have discussed this thing in the class also. See, you don't have to read anything apart from what I am teaching in the class, but whatever I am teaching you, you have to read it very thoroughly. Just 1 घंटे में. In the NSEM, you will have 60 questions in 2 hours. So, ऐसा नहीं है कि NSEM में सारी पीपीटी डाउनलोड करके एक एक क्वेश्चन ढूंढने बैठोगे, पेपर पूरा ही नहीं कर पाओगे 60 क्वेश्चन. You cannot cheat in the subject. Paper will be such. किसी के भी फुल मार्क. और एंसर में यू विल हैव 60 क्वेश्चंस इन 2 hours. डोंट थिंक दैट कि सब कुछ तो पीपीटी से आ रहा है, पीपीटी डाउनलोड करके आई विल रीड इन द एंसर. दिस इज नॉट एट ऑल पॉसिबल. यू हैव टू रीड बिफोर हैंड. तुम्हें पहले से पता होनी चाहिए चीजें हैं क्या. अभी 20 क्वेश्चन 1 घंटे में करने में कितना टाइम लगा सबको? वॉज दिस सफिशिएंट टाइम फॉर यू फॉर 20 क्वेश्चंस? नाउ जस्ट इमेजिन, इसका 3 times द नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल इंक्रीज एंड टाइम विल इंक्रीज जस्ट 2 times. डेफिनेटली नॉट ऑल द क्वेश्चंस विल बी वेरी लॉन्ग कि 2-3 स्टेटमेंट्स है. कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस होंगे डायरेक्टली. अब देखो, ये क्वेश्चन करने में 3 सेकंड से ज्यादा किसी को नहीं लगेगा अगर उसने पीपीटी पढ़ी हुई है तो. इफ यू हैव रेड द पीपीटी बिफोर हैंड, अगर ये डायग्राम किसी ने पहले देखा हुआ है पीपीटी में, ही विल नॉट टेक 2 और 3 seconds टू सॉल्व दिस. उसे पहले पता है यूज केस आना है. A lot of questions will be like this, if the, but still the time will be less if you have not read. You cannot solve your whole paper. Just by heart the PPT what I am telling you. You should be able to understand the concepts whatever I am teaching in the class. और जो भी पीपीटी में लिखा है वो you should know it thoroughly. क्योंकि पीपीटी से बाहर से तो मैं पूछ भी नहीं रहा हूँ कुछ अभी. Everything. This is a pretty interesting question actually. ये क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज रॉन्ग विद द बिलो यूज केस डायग्राम. मतलब इस यूज केस डायग्राम में क्या चीज गलत बनाई गई है. Simple terms. Okay, what is wrong with this use case diagram? The first statement is saying no secondary actor is there to initiate the background processes for support and repair request. मतलब ये support और repair request के लिए कोई भी यहाँ पे secondary actor नहीं है. क्या ये चीज गलत है? Is this wrong? No, इसकी जरूरत ही नहीं है. गलत थोड़ी है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है. Because I have told you ना, secondary actors बनाना compulsory नहीं है. You can leave it. Second statement, one primary actor can't interact with all 4 use cases. क्या ये गलत है यहाँ? क्या ये ऐसा नहीं कर सकता था? ये भी गलत नहीं है, कर सकता है. गलत होता अगर मैं ऐसा लिखता कि देयर इज अ कस्टमर, यहाँ पे एक ऐसा मैं यूज केस बना देता, XYZ नाम का एक्टर, और इसको मैं किसी से भी इंटरेक्ट नहीं करता. क्या ये गलत होता? मैं इसको किसी से भी एसोसिएट नहीं करता. विद एनी यूज केस आई वुडंट हैव एसोसिएटेड इट.
This is the diagram now. Is this wrong or correct? मे बी नहीं खुशी, ये गलत है। सेकंड आपके सेकंड टेस्ट में यही क्वेश्चन मैंने पूछा था। इन अ स्टेटमेंट दैट अ एक्टर कैन नॉट associate with any of the use case and can remain alone like this. Is this possible? This is not possible. This would have been wrong. Okay, this I have asked in your second test in the form of statement. And third is saying correct sequence of use cases is not shown. मतलब ये use cases के sequence correct नहीं दिखाए गए, क्या ये गलत है? Is this wrong? This is not wrong. ये तो बताया ना मैंने कि जरूरी नहीं है sequence में बनाओ. I have told you this is not necessary that you make in sequence. Yes, एक ऐसी वो follow किया जाता है, you can say rule कि जनरली सीक्वेंस में बनाते हैं, पर ये जरूरी नहीं है कि नहीं बनाया तो गलत हो गया. दिस इज नॉट रॉन्ग. लास्ट वन, यूज केसेस डिटेल्स नॉट मेंशन्ड. क्या इसकी डिटेल्स बनाना जरूरी है? वो नहीं बनाना है वैसे, राइट? सो दिस इज आल्सो नॉट रॉन्ग. सो नन ऑफ द स्टेटमेंट्स इज रॉन्ग इन दिस यूज केस. अगेन व्हाट इज रॉन्ग विद दिस बिलो यूज केस डायग्राम? अगेन दिस इज अ यूज केस डायग्राम. इसमें भी मेरे ख्याल से कोई स्टेटमेंट गलत नहीं थी. Is saying package can't be inside this, the same kind of a question जो अभी पहले पूछा है. पैकेज can't be inside this system, मतलब ये पैकेज सिस्टम के अंदर नहीं हो सकता, सिस्टम को पैकेज के अंदर होना चाहिए. ऐसा कोई मैंने बताया आपको पढ़ाते टाइम? Ever I told you anything like this? No, right? You can make system inside package, you can make package inside system, जो मर्जी बनाओ. So this is, there can't be a dependency between librarian and borrower. यहाँ पे there can't be a dependency between librarian and borrower, rather a generalization has to be there. Is this correct or wrong? Why this is wrong? Why this is wrong? अगर ये रॉन्ग बोलोगे आप, इफ यू आर सेइंग दैट दिस इज रॉन्ग, तब तो ये एक्टर भी गलत हो जाएगा, बिकॉज दिस एक्टर इज नॉट एसोसिएटेड विद एनी ऑफ द यूज केस. तब तो ये एक्टर भी गलत हो जाएगा ना. इफ यू वांट टू मेक जनरलाइजेशन, मतलब इनहेरिटेंस होता है. जनरलाइजेशन का मतलब है अगर ये आपका दिस इज योर दिस इज योर वेट अ सेकंड, या दिस इज योर बोरोवर, तो ये एरो होता है जनरलाइजेशन का. दिस इज लाइब्रेरियन, तो लाइब्रेरियन पेरेंट क्लास होता और ये चाइल्ड क्लास होता. डिपेंडेंसी रिलेशन मींस दैट दिस बोरोवर इज डिपेंडेंट ऑन लाइब्रेरियन. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इट्स फाइन परफेक्टली. जनरलाइजेशन की क्या जरूरत है? अगर जनरलाइजेशन बनाओगे तो जो चाइल्ड क्लास होगी वो चाइल्ड क्लास को भी किसी यूज केस से एसोसिएट होना पड़ेगा. दैट इज कंपलसरी. यू गेट दिस पॉइंट? इफ दिस वुड हैव बीन अ जनरलाइजेशन, अगर यहाँ पे पेरेंट चाइल्ड क्लास का कंसेप्ट होता, तब ये एक्टर खाली थोड़ी छोड़ सकते थे ऐसे. यू हैव टू एसोसिएट दिस एक्टर विद एनी ऑफ द यूज केस, तब इसको बनाना पड़ता है यूज केस के साथ. बट अगर डिपेंडेंसी है then you can leave it. This would have been a new question for you. Fine. Third step, relationship between lend item use case and remove reservation use case is wrong. ये वाला क्या ये गलत है? देखो, जब तुम लोगों ने कॉम्प्लिकेटेड यूज केस डायग्राम बनाया था, आई हैव टोल्ड यू दैट यू गाइज आर यूजिंग दिस एरो टू शो द पाथ कि पहले यहां से यहां है फिर यहां से यहां है. ये गलत है. डिपेंडेंसी रिलेशनशिप इज ऑलवेज प्रेजेंट इन ऑल द डायग्राम्स. ये हमेशा प्रेजेंट है. दिस इज अ जनरल फॉर्म ऑफ यूएमएल रिलेशनशिप. This only showing you that this relationship, this use case is dependent on this use case. That's it. Okay, so this is also not wrong. Fourth statement is borrower actor is not related to any of the use case which is mandatory. Now see this. अगर आपने इस स्टेटमेंट को, if you say this statement is wrong, तब इसको भी गलत होना पड़ेगा. क्या यहाँ पे कोई एक ऐसा ऑप्शन है ए और डी करके? एलिमिनेशन टेक्निक यूज करो अगर वैसे भी समझ आ रहा है तो. अगर ये स्टेटमेंट गलत बोलोगे बी वाली, तो डी को भी गलत होना पड़ेगा. है कोई? या सॉरी, पीओडी का ऑप्शन है तो एलिमिनेशन से नहीं हो पाएगा, फिर कंसेप्ट ही पता होना चाहिए. बट इफ दिस वुड हैव बीन ए एंड डी ऑप्शन, तब एलिमिनेशन लगा सकते हैं. यहाँ एलिमिनेशन काम नहीं करेगा, बी और डी ऑप्शन भी दिया हुआ है, और कोई ऑप्शन नहीं है. सो यू गॉट दिस ना, एवरीवन गॉट दिस बी एंड डी थिंग. आई हैव टोल्ड यू दैट इफ दिस इज अ एक्टर, दिस इज अनदर एक्टर. अगर यहाँ कोई डिपेंडेंसी रिलेशनशिप है, डिपेंडेंसी डॉटेड लाइन विद एरो, ये डिपेंडेंसी रिलेशनशिप है, मतलब ये एक्टर इसके ऊपर डिपेंडेंट है. उस केस में इस एक्टर को किसी भी यूज केस से एसोसिएट होने की जरूरत नहीं है, अकेला भी रह सकता है, जैसा इस डायग्राम में है, ये अकेला है.
बट इसकी जगह अगर कोई एक्टर होता जो इनहेरिटेंस में होता किसी दूसरे एक्टर के साथ, तब आप इस एक्टर को खाली नहीं छोड़ सकते थे इस तरह. यू हैव टू एसोसिएट इट विद अ यूज केस डायग्राम बिकॉज दिस इज राइट. एवरीवन गॉट दिस पॉइंट? कोई डाउट किसी को? So that is why again there is no statement wrong. What is the next question? अच्छा ये सबका गलत है क्वेश्चन. मैक्सिमम 99% of you have made this question wrong only because of this statement. ऑप्शन डी. सबने ऑप्शन मार्क किया है इस वाले को भी. अब ये गलत मुझे पता था तुम लोग करोगे और इसे उन्होंने दिया है. When I was teaching you class diagram, when I was teaching you classes, association, composition. ये composition है, right? This is the composition rule. When I was teaching you aggregation and composition in the class, for the first 5 minutes, instead of aggregation, I have used the word association. और तुम में से किसी ने मुझे नहीं टोका था उस टाइम कि सर आप association word use करो. After 3 minutes, I realized that I have used association instead of aggregation. Every one of you was sleeping. At that time only I have explained that aggregation means that class 2 is a part of class 1. Aggregation, not composition. This same statement I have made and written on your PPT with pen there while the class. I knew every one of you will make a statement, make this wrong. क्योंकि कोई क्लास में सुन तो रहा नहीं था. सबने इस ऑप्शन को मार्क किया, किसी का नहीं सही है. दिस क्वेश्चन इज किसी का सही है? हैज एनीवन मार्क दिस क्वेश्चन राइट? सबने ये ऑप्शन मार्क किया, सी एंड डी. बाकी तो इज प्रीटी सिंपल. दिस इज कंपोजिशन. कंपोजिशन का मतलब है ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्लास 2 लिव एंड डाई विद क्लास 1. डेफिनेटली अगर ये पेरेंट क्लास डिस्ट्रॉय हो गई तो ये पेरेंट क्लास भी डिस्ट्रॉय होगी. यस मदर गुड चंद्र ऑल्सो राइट. क्लास 2 कांट स्टैंड बाई इटसेल्फ. ऑब्वियसली यही मतलब है. टॉर्टोइज एग्जांपल एग्रीगेशन का था. इसके लिए मैंने बोला कोई म्यूजियम का एग्जांपल लिया था राइट. टॉर्टोइज और क्रीप वाला एग्जांपल वाज फॉर एग्रीगेशन. उसको बताते वक्त मैंने बताया था कि दिस इज अ पार्ट ऑफ tortoise is a part of creep. ये वर्ड मैंने यूज किया था वहां पे खुशी. तो वो एग्रीगेशन समझा रहा था कि ये कंपोजिशन है. समझ आया व्हाट आई एम टेलिंग यू? खुशी. या सो जस्ट दैट पीपीटीज अगेन. सब मैक्सिमम लोगों का ये गलत है. वही 2-4 लोगों जिसका सही है, जिसने दोबारा वो वीडियो कभी देखा होगा बस. ओके बिकॉज दिस स्टेटमेंट लुक्स एब्सोल्युटली परफेक्ट. क्लास 2 इज अ पार्ट ऑफ क्लास 1. हाँ भाई सही लग रहा है. दिस लुक्स ग्रेट बट दिस इज व्हाट एग्रीगेशन इज. ये एग्रीगेशन होता तब ये स्टेटमेंट सही होती. नॉट फाइन. बाकी तो इट्स फाइन, सबका सही है. ठीक है. हाँ दिस इज अ प्रीटी इजी क्वेश्चन. कोई ऐसा टफ क्वेश्चन नहीं है ये. सिंपली एक क्लास डायग्राम्स आर गिवन. इसमें मल्टीप्लिसिटी का क्वेश्चन था. ये फर्स्ट स्टेटमेंट इज क्या फाइंड करना था? इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स फाइंड करना था. ये सब पढ़ लिया करो है ना एक बार क्वेश्चन में. मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई आस्क्ड इनकरेक्ट एंड करेक्ट आल्सो. और हमेशा ऑप्शन में मैं करेक्ट भी देता हूँ इससे. ठीक है. तो उसको एक बार देख लिया करो. फॉर एग्जांपल हियर एवरी स्प्रेडशीट कंटेन्स सम नंबर ऑफ सेल्स. एवरी स्प्रेडशीट कंटेन्स सम नंबर ऑफ सेल्स. इज दिस ट्रू और फॉल्स? हर एक स्प्रेडशीट कुछ सेल्स को, ये स्टार है यहाँ पे है ना. Every spreadsheet will contain certain number of cells. This is true because there is start. अगर स्टार की जगह यहाँ 1 होता और यही स्टेटमेंट में फिर से बनाता तो क्या ये सही होता? मैं स्टेटमेंट देता, would this statement have been correct? It would have been false. सपोज यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी होती 0 से लेके स्टार तक, फिर ये स्टेटमेंट देता, क्या ये सही होता है या गलत? This would again have been false. क्यों? One spreadsheet can contain 0 cells also. ये भी एक possibility है, right? So this is how you have to solve multiplicities question. Otherwise, this is a very simple question. So this is a correct statement. Read the third statement. Every cell in the spreadsheet will contain exactly one value. Every cell in the spreadsheet will contain exactly one value. Obviously, यहाँ multiplicity 1 है. अगर यहाँ multiplicity star होती या multiplicity 1 to start होती
1 to star होती तब ये स्टेटमेंट क्या होती? If the multiplicity would have been 1 to star here, then this would have been false, क्योंकि एक सेल तब एक से ज्यादा वैल्यूज भी ले सकता था। इसको बताना ऐसे पढ़ना है, जहां से जहां तक आ रहे हो हैज के साथ पढ़ लो। एवरी सेल हैज, पढ़ना है एवरी सेल हैज एग्जैक्टली वन फॉर्मूला, वन स्प्रेडशीट हैज, यहाँ पे कंटेन्स लिखा भी है, एग्जैक्टली वन सेल, ऐसे पढ़ना है। इस एक्सप्रेशन क्या बोल रहा है? एन एक्सप्रेशन कैन हैव मेनी वैल्यूज, एन एक्सप्रेशन कैन हैव मेनी वैल्यूज, क्या सही स्टेटमेंट है? या इसके लिए हो चाहे इसके लिए हो, so every expression will have exactly one value, so B statement is wrong। समझ आ गया? कोई डाउट किसी को? ये क्या है? कंसीडर द बिलो माई क्लास एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स। अच्छा, सी दिस इज अ प्रीटी सिंपल क्वेश्चन, इट इज जस्ट आस्किंग द कांसेप्ट्स ऑफ पब्लिक प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। अगर किसी को पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड आता है तो ये क्वेश्चन सही हो गया होगा। एट्रीब्यूट वन एंड ऑपरेटर वन, ये क्या सिंबल है? पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड क्या है? ये क्या एक्सेस स्पेसिफायर? which access specifier this is a public specifier। तो अगर पब्लिक है, एट्रीब्यूट वन एंड ऑपरेटर वन ये पब्लिक है, सो कैन दे बी एक्सेस बाय मेंबर्स ऑफ सेम क्लास? ट्रू और फॉल्स? पब्लिक है तो सब एक्सेस कर सकते हैं, क्या सेम क्लास हो चाहे दूसरी क्लास हो, सब एक्सेस कर सकते हैं, ये सही है। एंड ऑपरेटर थ्री, एट्रीब्यूट थ्री एंड ऑपरेटर थ्री, ये पब्लिक है प्राइवेट प्रोटेक्टेड है? व्हाट इज दिस? एट्रीब्यूट थ्री एंड ऑपरेटर थ्री, दिस इज प्रोटेक्टेड। तो अगर ये प्रोटेक्टेड है तो दे कैन बी एक्सेस बाय मेंबर्स ऑफ एनी अदर क्लास इन द सेम पैकेज। इज दिस ट्रू और फॉल्स? इन द सेम पैकेज, इज दिस ट्रू और फॉल्स? दिस इज ट्रू, दिस इज परफेक्टली ट्रू। अगर इसकी जगह मैं खाली इतना देता, इफ आई वुड हैव गिवन यू दिस मच, दैट एट्रीब्यूट थ्री एंड ऑपरेटर थ्री कैन बी एक्सेस बाय मेंबर्स ऑफ एनी अदर क्लास, अब ये क्या है? अब एनी अदर क्लास में तो ये किसी और पैकेज की भी बात आ गई, देन दिस वुड हैव बीन फॉल्स, देन दिस वुड हैव बीन फॉल्स, सो दिस इज आल्सो करेक्ट। ठीक है, करेक्ट ही फाइंड करने दो ना, करेक्ट फाइंड करने दो। थर्ड स्टेटमेंट देखो, एट्रीब्यूट टू एंड ऑपरेटर टू कैन बी एक्सेस बाय मेंबर्स ऑफ डिराइव्ड क्लासेस, मतलब जो चाइल्ड क्लासेस होंगे। एट्रीब्यूट टू एंड ऑपरेटर टू ये क्या है? पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड? प्राइवेट है क्या? प्राइवेट क्लास का कैन अ चाइल्ड क्लास एक्सेस, एक पेरेंट क्लास है ए, उसके अंदर कुछ प्राइवेट मेंबर्स हैं, पेरेंट क्लास के चाइल्ड क्लास है बी, क्या ये चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास के प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस कर सकता है? नहीं कर सकता है, तो सिंपल क्लास का कांसेप्ट है। दिस इज सिंपल कांसेप्ट ऑफ क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स। दिस इज अ प्रीटी सिंपल क्वेश्चन, बट इसमें भी कई लोगों ने गलत किया, स्पेशली दिस थर्ड स्टेटमेंट, सम ऑफ यू हैव मार्क्ड इट करेक्ट आल्सो। ओके, और ऐसा हर जगह एक ऑप्शन मिलेगा जिसमें आप कंफ्यूज हो गए। सो जस्ट इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, राइट? इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड बस कंसेप्ट पता होना चाहिए, दैट्स इट, नथिंग मोर इज देयर। एवरीवन गॉट दिस? एनी डाउट्स? See, for this test, for your midsem, on an average, every one of you should have scored around 13 to 14. This should be your average score. Okay, definitely there were 5 to 6 questions that were not solvable by all, but 13 to 14 should be your average score. And I think 40% of your class has got a single digit only. 7, 8, 9, 8, 8 तो बहुत लोग गए हैं. But okay, midsem was only 20 marks out of, इतना बहुत फर्क नहीं पड़ेगा. But endsem will be of 50 marks. Just observe the kind of questions, read your PPTs thoroughly. थोड़ा सा सिलेबस हमारा और बचा है. ओके, अभी मिड सेम से, अभी एंड सेम से पहले 2 टेस्ट और दोगे तुम लोग, क्लास टेस्ट, उसमें एक आइडिया लग जाएगा कि बाकी मॉड्यूल से व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आई एम आस्किंग. सो प्रिपेयर ऑन दैट लेवल ओनली. ओके, प्रिपेयर कीपिंग दोस क्वेश्चंस इन माइंड ओनली. इफ आई एम आस्किंग, अभी एक पैकेज का क्वेश्चन था मर्जिंग का, पैकेजेस की स्लाइड में मर्जिंग वाले लास्ट में यू हैव द सेम 5 पॉइंट्स मेंशन्ड देयर एग्जैक्टली, एंड आई वाज यू द एग्जैक्टली सेम 5 पॉइंट्स. और बहुत लोगों का वो क्वेश्चन भी गलत है. दिस सिंपली मींस यू आर नॉट रीडिंग द पीपीटीज. यू थिंक पीपीटी तुम लोग कैसे पढ़ते हो, मैं बताता हूँ. तुम लोग पीपीटी खोलते होगे, सपोज यू हैव सीन स्टीरियोटाइप्स, तुमको याद है अच्छा स्टीरियोटाइप्स आई हैव रेड इन द क्लास, ऐसे होता है, दिस कैन वी कैन क्रिएट एनी यूएमएल डायग्राम विद द हेल्प ऑफ स्टीरियोटाइप्स. मुझे तो आता है, मैं आगे बढ़ गया. दिस इज हाउ यू रीड, राइट? यस और नो? दिस इज हाउ मोस्ट ऑफ यू रीड द पीपीटीज.
You don't read the statements I have given for stereotypes. That is why you are making the mistakes. You think that okay, I know stereotypes perfectly fine, I know it, मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है. When you do this, then you will make the mistake. This mistake you are making it third time. Even if you know a concept, just read the lines. कम से कम एक या दो बार पढ़ लो ताकि क्वेश्चन एग्जाम में याद आ जाए कि कहाँ से पूछा था. कम से कम एक बार स्ट्राइक कर जाओगे, एक बार पढ़ लोगे लाइंस को, यू विल एबल टू सॉल्व योर क्वेश्चंस क्विकली. वरना उसी लाइन को चार चार पांच बार पढ़ोगे एग्जाम में कि सही है कि गलत है, सही है कि गलत है. 10-12 पीपीटीज से एंड सम में यू कैन नॉट फाइंड एनीथिंग. यू शुड बी एबल टू रीड एंड रिवाइज योर पीपीटीज बिफोर एंड. वरना फिर वही एंड सम 60 मार्क्स का होगा, यू विल स्कोर 30, 35, 40 ऐसे जाएंगे सबके मार्क्स. Okay, so paper is this subject is very easy. Honestly speaking, this is very easy. But we will see. We will see. I will give you backtracking. If this would have been in my hand, I will give you backtracking. See, with the help of backtracking, the one benefit that you have is you can scan through your paper quickly. Okay, एक बार पूरा पेपर क्विकली स्कैन कर दो. मैंने मेल भी किया था ये चीज. जो इजी क्वेश्चन उसको, उसके बाद ये डिफिकल्ट क्वेश्चन जो बहुत लाइन वाली स्टेटमेंट्स है उसको बार बार पढ़ो. इन द एंड सम आल्सो आई विल गिव यू backtracking most probably. तो 60 क्वेश्चंस होंगे. फॉर द फर्स्ट 10-15 मिनट्स क्विकली स्कैन थ्रू द पेपर, और जो वन वन लाइन वाले स्टेटमेंट्स है जो क्विकली सॉल्व हो जाते हैं. जैसे डायग्राम्स में बॉक्स में क्या आएगा, दिस इजी क्वेश्चंस, उसको सबसे पहले सॉल्व कर लो, फिर एवरेज सॉल्व करो, फिर इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करो. ये भी वैसे एवरेज में है, ये भी इजी है, एवरेज भी नहीं है ये तो. गॉट द पॉइंट? दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. आने के लिए इतना बड़ा डायग्राम है. ओके, देयर इज नथिंग कॉम्प्लिकेटेड इन दिस क्वेश्चन. दिस विल ओनली टेक योर टाइम इफ यू आर नॉट क्लियर विथ योर क्लास कंसेप्ट्स. वरना एक स्टेटमेंट पढ़ोगे तुरंत पता चल जाएगा वो सही है या गलत. फॉर एग्जांपल क्या फाइंड करना था इसमें, कंसीडर द बिलो डायग्राम. फाइंड क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स फाइंड करनी है. 0 इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स है इसमें. ये क्या नोट दिया हुआ है, ऑल ऑरेंज कलर लेबलिंग्स आर हियर नॉट करेक्ट बट ऑल यूएमएल बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स आर करेक्ट. व्हेन आई एम सेइंग ऑल यूएमएल बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स आर करेक्ट, इसका मतलब है ऑल द डायग्राम्स, ऑल द नोट्स, ऑल द रिलेशनशिप्स यू आर यूजिंग, ये सब सही है, ये गलत नहीं है. मतलब ऐसा नहीं है कि इस क्लास और इस क्लास के बीच में देयर शुड हैव बीन अ कंपोजिशन. इट इज अगर एग्रीगेशन बना है तो ये सही है, इसका मतलब ये है. इफ आई एम सेइंग यू बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स आर करेक्ट, इसका मतलब डायग्राम सही है. लेबलिंग गलत हो सकती है, ये लेबलिंग का नाम गलत हो सकता है ये कंपोजिशन की जगह एग्रीगेशन लिखा, ये हो सकता है. But this relationship is correct. This is the meaning of this statement. First statement is showing you shape is an abstract class. This shape. If you have read the class and objects PPT, वहाँ पे एक abstract class लिखा हुआ है. अगर italics में if any class name is written, if a class name is written in italics or sometimes in stereotypes also, that is your abstract class. So this is a true statement. Circle, rectangle, polygon are derived from shape. Circle, rectangle, polygon are derived from shape. Obviously इनहेरिटेंस हो रहा है, ये पेरेंट क्लास है, ये सारी चाइल्ड क्लासेस है, ये भी सही है. शेप कैन एग्जिस्ट विदाउट विंडो. शेप का है ये, शेप कैन एग्जिस्ट विदाउट विंडो. ऑब्वियसली ये क्या रिलेशनशिप है, एग्रीगेशन है. अगर कंपोजिशन होता तब पेरेंट क्लास डिस्ट्रॉय होती तो चाइल्ड क्लास भी डिस्ट्रॉय हो जाती, राइट? If this would have been a composition, तब अगर ये विंडो क्लास डिस्ट्रॉय होती तो शेप क्लास भी डिस्ट्रॉय होती है. बट दिस इज नॉट बी डिस्ट्रॉयड. ये भी सही है. पॉइंट कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट अ सर्कल. कहाँ है पॉइंट? दिस इज पॉइंट, दिस इज सर्कल. व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप इज देयर? कंपोजिशन. ऑब्वियसली इट कैन नॉट सर्वाइव विदाउट सर्कल. ये भी सही है. इवेंट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन विंडो. ये इवेंट क्या किस पे डिपेंड कर रहा है? Which is depending on what? This is window, this is event. What is dependent? Window on event. Yes. Window से arrow जा रहा है ना event तक dependency का. So window is dependent on event, not event is dependent on window. So this statement is also correct. Circle contains 4 methods. Circle का है. Circle contains 4 methods. देखो एक method ये है, एक method का मतलब ये functions ही होता है. Simple statement. This is also correct.
The attributes and method names of rectangles are hidden, and this is perfectly fine in UML. Rectangle. This मतलब इसमें मैंने कोई भी functions या कोई भी data attributes int a int b ये सब मैंने define नहीं किया. This is perfectly fine in UML. All the UML basic building blocks are correct. यहाँ लिखा हुआ है. इसका मतलब है पूरा डायग्राम करेक्ट है, खाली लेबलिंग गलत हो सकती है. तो ऑब्वियसली दिस स्टेटमेंट हैज टू बी करेक्ट. फाइन. सो देयर आर जीरो स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट. एनी डाउट्स एनीवन? This kind of questions again will come in your exam. Total number of correct questions, total number of incorrect questions. Just be patient. Every question is simple. इसमें कुछ भी complicated था, कुछ complicated नहीं था. एक चीज गलत करोगे तुम लोग इस क्वेश्चन में, पहली वाली स्टेटमेंट शेप इज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास. अगर किसी ने क्लास पीपीटी नहीं पढ़ी है, वहां पे इटैलिक्स में लिखा हुआ है दैट दिस इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास, देन यू विल फील दैट दिस इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट क्लास. तो वो उन्होंने 1 मार्क किया होगा, उन्होंने 1 मार्क किया होगा. दैट्स इट. इतनी गलती होगी इस क्वेश्चन में. एनी डाउट्स? ठीक है. कंसीडर द below statements, total number of incorrect statements are. फिर से सेम क्वेश्चन, इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स निकाल लिए. कॉमन मैकेनिज्म्स टू पैकेजेस वाली जो पीपीटी है आपकी, जिसमें स्टीरियोटाइप्स, एडॉर्नमेंट्स, कंस्ट्रेंट्स, ये सारी चीजें बताइए. उसकी पहली, सर्कल कंटेन्स 8 मेथड्स. 8 कहां से हो गया? 4 में ना. 8 कहां से है? ये सर्किल है ना. एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये, चौथा ये. 4 ही तो है सौरभ. 4 ही तो है. 4 फंक्शंस. मेथड मतलब फंक्शन. क्या ड्यू टू? नहीं नहीं, सिर्फ सर्किल क्लास का पूछा है ना, सर्किल का पूछा है खाली. सर्किल के अंदर तो इतने ही है, बाकी यू विल नॉट काउंट दीज हियर. अगर मैं बोलता टोटल मेथड्स दैट आर, ऐसे इस तरह के वे क्वेश्चन वैसे भी मैं नहीं पूछूंगा. अगर इनहेरिटेंस वगैरह का होगा बताऊंगा आपको पहले ही पूछने से. इनहेरिटेंस की बात करो, यहाँ से सर्किल क्लास की बात हो रही है, इसी क्लास की. आई हैवंट यूज्ड द वर्ड इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट हियर. बट या फाइन, यू कुड हैव मेड दिस रॉन्ग बेस्ड ऑन दैट. बट अगर ऐसी कोई स्टेटमेंट आ रही है तो सिर्फ उसी क्लास की बात हो रही है, और उसके आगे पीछे इनहेरिटेंस हो रहा नहीं हो रहा उससे मतलब नहीं है अभी. ओके, वरना तो 8 हो ही जाएंगे अगर इनहेरिटेंस इंक्लूड करोगे तो. ठीक है सौरभ? ओके. See, all these 6 statements are directly of your common mechanisms to packages PPT. कुछ नहीं, सीधे सीधे उठा के वही स्टेटमेंट्स मैंने लिखे हैं. We can represent routers and hubs using stereotype nodes. Obviously possible. Stereotype से कुछ भी represent कर सकते हो. We can maintain version numbers and author name using tagged values. Obviously you can do this with the help of tag values. Same statements are given there. Same I have explained in the class also. कुछ भी इसमें ऐसा वेग नहीं है. We can specify certain range of values using constraints. Yes, इसीलिए constraints use होते हैं. Constraints are restrictions, right? ऐसे जो brackets में देते हैं. A note may contain graphical symbols also. Yes, ये second test में भी I have asked you the same question. Adornments are only graphical symbols that are added to the elements base. अच्छा बताओ इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है पूरे में से? Adornments वन, राइट. सिर्फ ग्राफिकल्स नहीं होंगे, ऐसे ही वेग मतलब ऐसी एक्सट्रीम एंड वाली स्टेटमेंट वैसे भी गलत होती हैं. इफ यू सॉल्व कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो इतने only done by this can be only done by this is the only possible answer. ये सारी जल्दी गलत ही होती है स्टेटमेंट्स, और इस साफ साफ आपके स्टेटमेंट में मिला हुआ है. Adornments is basically like here, like this. For this method I have defined that this can be an integer, float, double. What will, so ये खाली ग्राफिकल थोड़ी है, तो टेक्स्ट में लिखा हुआ है ना यहाँ पे. So that is why adornments are not only graphical items. ये देखो यहाँ टेक्स्ट में लिखा हुआ है. This is written in text. Fine. So this is the wrong statement only. Exact statements are from your PPTs only. These statements. Stereotypes can increase the number of human types का. ये statement given भी है आपकी. So total number of incorrect statements is 1. This is without. Statements regarding merging packages.
पूरे पैकेजेस में कोई भी थ्योरी पॉइंट नहीं है, सिर्फ जब पैकेजेस खत्म हो रहे हैं तो लास्ट में 4 थ्योरी पॉइंट लिखे हुए हैं। सभी लोग पीपीटी खोलो अपनी, मर्जिंग वाली, पैकेजेस वाली, उसका जहाँ पे पैकेज मर्ज हो रहे हैं वहां पे मैंने कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। ओपन एवरीवन। खोल लिया? क्या वहां पे आपको यही सारे चारों पॉइंट दिख रहे हैं? 3? क्योंकि मैंने जितनी कॉपीज देखी किसी ने 3 नहीं मार्क किया है। यस। हाउ मेनी ऑफ यू हैव मार्क 3 है आंसर? ओके, कुछ गुड। एंड see all these 4 statements are directly from there. Yeah, Kushi. This is present in your PPT. Why this is not present in your PPT? Everyone got these 4 points or not? ये तो मैं बता रहा हूँ पढ़ने के लिए कि पीपीटी में है, अगर नहीं भी है तो भी ये सॉल्व हो सकता है कंसेप्ट से, बट स्टिल एवरीवन फाउंड दिस इन योर पीपीटीज और नॉट? पीपीटी है अपलोडेड, कुछ तो मैंने एक्सप्लेन किया है, मुझे याद है। क्लास में हैव एक्सप्लेन्ड इट, हो सकता है पीपीटी में फिर मिस हुआ हो। ओके, आई विल अपडेट द पीपीटी। चलो कोई नहीं, आई विल अपडेट द पीपीटी, बट ऑल दीज स्टेटमेंट्स आर राइट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? बट ये क्लास में हैव एक्सप्लेन्ड दिस थिंग। इसमें से बताओ विच स्टेटमेंट इज A1 इज रॉन्ग, राइट? क्योंकि अगर कोई भी प्राइवेट एलिमेंट, जब भी कंप्यूटर साइंस में प्राइवेट वर्ड यूज होता है, चाहे क्लास के साथ हो, चाहे किसी फंक्शन के साथ हो, चाहे किसी पैकेज के साथ हो, उसका नो टर्म्स एंड कंडीशंस अटैच्ड, किसी भी कंडीशन में उसको तुम एक्सेस नहीं कर सकते हो, चाहे स्टीरियोटाइप से यूज क्यों ना कर रहे हो। सो दिस इज द ओनली रॉन्ग स्टेटमेंट। बाकी आई हैव टोल्ड यू दैट मर्जिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट यही था दैट यूएमएल प्रोवाइड्स यू मल्टीपल इनहेरिटेंस। एक पैकेज को अगर मर्ज कर रहे हो तो उसके अंदर जितने भी सब पैकेजेस होंगे वो भी मर्ज होंगे साथ ही साथ। ये उस एग्जांपल में भी शो है, जस्ट पैकेजेस में जो एग्जांपल है ना, जब इस पैकेज को मर्ज कर रहे हैं इधर तो सारी चीजें उठ के आ रही है, right? If the source package and target package both have a sub package of the same name, or merge takes between those sub packages also. Obviously true. So PPT, because this was mentioned in the PPT, हो सकता है PPT update नहीं हुई हो, but this I've explained you in the class also. Okay, so there was no point in making this question. These are easy questions, right? There is no rocket science here applied. These are pretty easy questions. अब ये नहीं एक्सप्लेन करूंगा यार, ये गलत है तो फिर तुम लोग जानो। इसमें डाउट है किसी को? इसमें डाउट है बेटा तो फिर फोन करना मुझे पर्सनली। इसमें भी किसी को डाउट है तो फिर मुझे फोन करना तुम, आई विल क्लियर डाउट्स ऑन द फोन। डाउट है किसी को इस वाले में? वेरी सिंपल क्वेश्चन बेस्ड ऑन द सीआरसी कार्ड, सिंपल सा डायग्राम है। दिस इज अ गुड क्वेश्चन। ऐसे बहुत इजी क्वेश्चन है, बट इसमें कंफ्यूजन का पार्ट ये था कि दिस इंक्लूड वेदर दिस इज अ स्टीरियोटाइप और दिस इज अ रिलेशनशिप। So when I was teaching you use case diagram, I have told you this is a relationship, and when I was teaching you stereotypes, I have told you that this is a stereotype also. So this is both. बहुत इसमें कोई वैसा ट्रिक नहीं था, कई लोगों ने एक्चुअली खाली रिलेशनशिप भी मार्क कर दिया। So just keep this in mind. You have repeated, you have done this mistake on midsem, it's perfectly fine. बहुत ज्यादा मार्क्स का नहीं था midsem, but these kind of mistakes you should not do for your end sem. Okay, I will recheck all the PPTs. किसी वैसे खाली ये पैकेज वाली मेरे ख्याल से लास्ट स्लाइड थी तो वो शायद ऐड नहीं हुई है, so I will upload that and see total
18 क्लासेस हुई हमारी आई थिंक, राइट। मैक्सिमम यूज सिलेबस विल कंटेन आई थिंक अराउंड 24 to 25 क्लासेस, जो 30 ले लेते हैं। मैक्सिमम 30 क्लासेस विल बी देयर ऑफ अराउंड 1 hour। स्टीरियो टाइप भी है, स्टीरियो टाइप भी है, रिलेशनशिप भी है, बोथ दोनों तरह से यूज हो रहा है ना। इस डायग्राम में ये एज अ रिलेशनशिप यूज हो रहा है, बट ये रिलेशनशिप बनाने के लिए यू हैव यूज्ड अ स्टीरियो टाइप, सो दिस इज बोथ। डाउट क्या है, दिस इज बोथ राइट। तुम क्या कहना चाहते हो, खाली स्टीरियो टाइप? फाइन। So that's it. This was your midterm paper. Whatever marks you have scored is perfectly fine. Last two modules are remaining: state diagrams and component and deployment diagrams. Component and deployment diagrams are very simple. One at most 1 or 2 classes will be taken. For state diagrams, we will take 2-3 classes depending on the speed which we are going. That's it. That is. See, in your midterm, I have asked you only 2 modules. Okay. In the end sum, you will have all your 4 or 5 modules. 5 modules. Right. So whatever PPTs I will upload, whatever I'm teaching in the class, you just stick to it and you revise it thoroughly. कोई और अलग से बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट इफ पॉसिबल वॉच द क्लास रिकॉर्डिंग्स एटलीस्ट। क्लास रिकॉर्डिंग डाउनलोड भी हो जाते हैं, डाउनलोड करके वीएलसी में स्पीड बढ़ा के देख लेना। गॉट द पॉइंट। और एक बार ऐसे बिफोर यू एंड सेम वी विल डू अ क्रैश कोर्स ऑफ दिस होल सब्जेक्ट, एक वीक में, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा जल्दी खत्म हो जाएगा अभी। सो व्हेन योर एंड सेम वुड बी कमिंग इन दिसंबर, उसके जस्ट थोड़ा सा टाइम पहले वी विल डू अ क्विक क्रैश कोर्स ऑफ दिस। तो स्टार्टिंग से पूरा एक बार एंड तक फिर से देख लेंगे जल्दी से, so you will get an idea also. So from your diagrams, okay, and till now you have given 1 assignment and 2 tests, right? One more assignment I will give and 2 more tests you have to give. Total assignments are your 50%, बाकी के 20% is your class engagement। ये सब मैंने वैसे पहले बता दिया है, फिर से मैं बता दे रहा हूँ ताकि आप लोग कुछ ऑनलाइन ही होना चाहिए कुछ, आई थिंक दिसंबर तक। तो आई डोंट नो एक्चुअली, आई डोंट हैव एनी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस। अगर खुलना होगा तो डोंट थिंक ऑफलाइन एग्जाम्स हो सकते हैं अभी, पॉसिबल नहीं लगता मुझे। आई डोंट नो, 90% चांस आर देयर इट विल हैपन ऑनलाइन ओनली योर एंड। कुछ चेंज होगा तो दिवाली के बाद पता चलेगा। ओके, so that's it. We'll start new module from the next class. Fine. Sure, thank you.